Good morning, students. We are discussing the chapter Physical World, in which we have discussed the basic meaning of science, physics, basic principles of physics, which are unification, reductionism, scope of physics, which is macroscopic level, microscopic level, fundamental forces, and the conservation laws. In the laws of conservation, we have discussed law of conservation of mass and law of conservation of energy. Now, today we will discuss law of conservation of linear and angular momentum. So, firstly, what does it mean by the term momentum? Momentum is basically related to a body which is in motion. That is, if a particle or a body is in motion, that definitely have the momentum. Momentum is basically mass into velocity. So, we are discussing linear momentum, that is ki line के along linear, that is along the line. So, space में क्या है ये द सिमेट्री ऑफ द लॉज ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस दैट इज ट्रांसलेशन में हमारा कैसा मोशन होता है लीनियर मोशन होता है तो स्पेस में हमारा जो ट्रांसलेशन के अलोंग जो सिमेट्री है वही हमारी क्या बताती है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन को बताती है फॉर एग्जाम्पल हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो तो सन पे और सॉरी मून पे और अर्थ पे वेरी कर रहा है बट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सेम एट बोथ द मून एंड अर्थ नाउ come to the next point law of conservation of angular momentum in this term we will discuss along for the conservation of angular momentum angular that is at an angle if we will discuss in space so there is no point which can be considered as origin space is homogeneous throughout so the isotropy of space that is no intrinsically direction in space कि स्पेस में हमें किसी एक पॉइंट को लेके हम बता नहीं सकते कि दिस इज दैट पॉइंट किसी भी एक पॉइंट को बता नहीं सकते जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की स्टडी करते हैं तो उसमें भी हम ओरिजिन को एज्यूम करते हैं सो तो जो ये आइसोट्रोपी है स्पेस की यही हमें क्या बताएगी एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन एक्सप्लेन करेगी Okay, next we will discuss in the coming video. Thank you.